Hello, kids. How are you all? I'm sure you all are staying at your home feeling happy and healthy. So, as you know, that we are taking virtual classes during COVID-19 lockdown. So, today I am here. My name is Tanushree, and I will be teaching you lesson number one, the moon, from your English ladder book. So, before beginning the poem, I would like to tell you some interesting facts about the moon. मून जिसे आप रोज देखते हैं अपने स्काई में, जब भी आप बाहर निकलते हैं शाम को रोज ही आपको मून दिखता है, रात में भी आपको मून दिखता है वॉक करते हैं तो, एंड मून आपको बहुत सुंदर भी लगता है. सो लेट अस नो समथिंग अबाउट द मून. कभी आपने सोचा है कि मून है क्या, या हम मून को इतना शाइनी कैसे देख पाते हैं? सो लेट अस नो सम फैक्ट्स. फैक्ट नंबर वन, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून एक नेचुरल सैटेलाइट है. अब नेचुरल तो आपको पता है, विच इज नॉट मैन मेड, जो मैन नहीं बनाता, विच इज मेड बाय द नेचर, जैसे आप और मैं भी नेचर से ही बनाए गए हैं. सैटेलाइट, सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, जैसे आपकी अर्थ हुई, अर्थ के आसपास बहुत सारी सैटेलाइट्स होती है राउंड शेप की, अलग अलग शेप्स की. उसके ऑर्बिट में यानी अर्थ जिस लाइन पे घूमता है उसी लाइन पे और भी ऐसी तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ से कम्युनिकेशन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल फोन्स जो आप ऑपरेट करते हैं उसमें भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसे भी बनाया गया है ताकि हम मोबाइल फोन से communicate कर सकें. So the moon is a natural satellite. It is not made by anyone, but moon is a satellite that revolves around the earth, and so it is for communication also. The moon is made of rock. Moon का surface कैसा है? Rocky. वहां पे बहुत सारे rocks हैं. The moon is about 3,82,400 kilometers away from the earth. So when we see moon, it seems so near to us, but in actual moon is 3,82,400 kilometers away from the earth. बहुत 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 ज्यादा दूर है. The moon is about 1/4 size of the earth. If we try to compare the size of the moon, since we are not aware about the size of the earth, तो अगर हम देखें तो मून जो है वो अर्थ का 1/4 हिस्सा है. यानी अगर अर्थ के 4 पार्ट्स हैं तो मून सिर्फ उसका 1 पार्ट जितना बड़ा है. The moon does not produce its own light. Okay, so whenever we see the moon in the sky, we see that moon is shining, moon is very moon is actually twinkling. So basically the moon does not have its own light. Moon के पास खुद की light नहीं है. मून जो लाइट देता है हमें, या मून से जो हमें लाइट दिखती है वो सन की होती है, बिकॉज द सन इज सो शाइनी एंड ड्यू टू द नाइट स्काई वी आर अनेबल टू सी द सन. सन तो वही रहता है बट हम सन को नहीं देख पाते बिकॉज इट इज डार्क. सो देयरफॉर द मून अपीयर्स एंड सन गिव्स इट्स लाइट to moon so that we are able to see the moon. And the moon has frozen water. moon के पास, moon पे कैसा पानी है? chilled. The moon changes its shape every night. Moon basically जो होता है वो अपना shape हर दिन बदलता है. Okay. Now let us begin the poem. And before we begin the poem, let us know something about the poem. Poem के बारे में जानना जरूरी है. The poem is written by Eliza Lee Cabot Follen. Poem किसने लिखी है? Eliza Lee Cabot Follen ने. There are two characters in the poem. So आपको इस poem में दो लोग नजर आएंगे. कौन कौन है? There is one mother and another is one child. They are standing at their roof and watching the shiny moon. So both of them are standing at the roof and watching the shiny moon in the night sky. This child personifies the moon as she personifies, यानी child को moon जो है वो एक she girl की तरह, एक girl की तरह दिखने लगता है, and child उसको एक girl जैसा compare करने लग जाता है. The child tries to compare the moon as she and compares her with a lamp that flies in the air. Child thinks that the moon is like a lamp that flies in the air. जैसे air balloons आपने देखे हैं उस तरीके से. A bow and round shape O. So someday the moon is a bow to a child, bow यानी धनुष जैसे, और कभी कभी full O round shape जैसे. So the child gets so excited that it calls the moon pretty and very innocently asks the moon about the secret of its shine on child's nursery floor. So child is very curious. Child को ये सब moon के बारे में facts नहीं पता है.
इसीलिए चाइल्ड को मून बहुत प्रिटी लगता है और बहुत इनोसेंटली वो मून से पूछता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर शाइन, तुम्हारे पास कौन सा सीक्रेट है जिससे तुम शाइन करते हो और मेरे फ्लोर को, मेरी नर्सरी यानी मेरे छोटे फ्लोर को शाइनी बनाते हो. सो लेट अस बिगिन द पोएम नाउ. The moon. Okay, you can see the child is sitting on the roof and watching the moon. Oh, look at the moon. He's pointing towards the moon. He's with his mother and he's pointing towards the moon and shouting, look at the moon. She is shining up there. So he calls the moon that the moon is shining up in the sky and he points towards the moon. Oh, mother. So here we come to know that mother is another character with whom the child is watching the moon. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. So he says that the moon is hanging in the air just like a lamp which is floating in the air, which is hanging in the air, that flies in the air. उसको moon जो है वो एक लैम्प की तरह नजर आ रहा है जो कि एयर में फ्लाई कर रहा है. Phases of the moon. Okay, see, you can see here in the picture that moon changes its shape daily and किसी दिन हमें moon ऐसा दिखता है, कभी ऐसा और कभी ऐसा. So last week she was smaller. Now the child is complaining, not complaining, but the child is excited that every day the moon changes its shape. Last week the moon was very small and it's shaped like a bow. You can see this is a bow, धनुष जैसा. अगर हम यहाँ से इसको join कर दे तो एक धनुष बन जाएगा. But now she is grown bigger. Now the child must have witnessed the another shape of moon, and now it says that it has grown bigger. She here represents the moon. She has grown bigger and now it is like a round O. So the child is not aware of the very fact that why the phases of moon are taking place. उसे नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों होता है, but उसे सिर्फ क्या दिखता है कि moon का shape हर दिन बदलता है, and that is why he is very curious to know why it happens. Let's proceed with the another stanza. Pretty moon, how you shine on the door. Pretty moon, that is what the child is shouting at the moon. That moon is pretty. Moon is very pretty. Moon बहुत beautiful है, बहुत magnificent है. How you shine on the door. And the child is astonished. The child is excited to see that how the moon shines on the door. How it is possible that the light of the moon is making the door of the child shine and make it all bright. And the child is very much excited to know that what is the secret behind this shiny floor, shiny light of moon, which is making actually the child's floor as bright as the moon. So since the child is not aware of the fact that the light which we see in the moon is the sun's light, which is being reflected to us on earth when it is the night time. But the child is only interested in knowing the secret of the moon, which definitely the child would come to know when he grows bigger. जब child बड़ा हो जाएगा तो उसे भी moon के facts के बारे में पता चल जाएगा, and then he would come to know that what is the secret of this shiny moon. But till the time he is very much happy to see that moon shines like everything in the sky, like stars, like all these planets, and that is why the child is very curious to know that what is the secret behind its shiny space. So this is all about the poem The Moon. आप में से बहुत सारे बच्चे मून को रोज देखते हैं, लेकिन जब आप अगली बार देखें तो उसके शेप्स को डेली नोटिस करें और ये देखें कि किस दिन मून का शेप क्या होता है. इससे आपको खुद एक फैक्ट नजर आएगा एंड आप खुद कंक्लूड करोगे कि मून कितने दिनों में अपना शेप बदलता है. And this is how we grow up and learn new things. So with this, I will wind up this poem now, and we will come meet next time with a new lesson, with a new poem, and with a new shiny thing. Till then, take care, stay home, stay healthy, and stay happy.